57 on examinations. Listen to on examinations. Winston S. Churchill on examinations. What is the meaning of examination? What is the meaning of examination? Examination. What is the meaning of examination? The act or process of examining. The act or process of examining is known as examination. The act or process of examining. The act or process. The act or process of examining is known as examination. So, on examination means something about examining procedures, which is explained by Winston S. Churchill, the then Prime Minister of England. England रो Prime Minister थिले Churchill, एवं से तांकर जो स्कूलिंग बाबद रे, तांकर एग्जामिनेशन बाबद रे, तांकर जो प्रैक्टिकल आइडिया थिला एक्सपोज अप करिसंती हमर चैप्टर इंग्लिश रे. Introducing the author, Sir Winston Leonard Spencer Churchill was born in 1874 and died in 1965. It is something relating to his birth and death. Was the Prime Minister of England twice, from 1940 to 45 and from 1951 to 55. Listen, students, we learn something about Winston Churchill. Churchill was the Prime Minister of England. So who was the first Prime Minister of England? Robert Walpole. Robert Walpole was the first Prime Minister of England. And at the present scenario, Rishi Sunak is the present Prime Minister of England. But so far as the date is concerned, from 1940 to 45 and 1951 to 55, he was the Prime Minister of England. A noted statesman and orator. बहुत बड़े statesman थे. What is the meaning of statesman? One who speaks for others. जे अलगा मान को पाई कौन करथांती डिबेटिंग बा सेमिनार रे किछ कथोपकथन करंती, अर्थात one who describes, one who takes the leadership or sportsmanship or I mean statesmanship. तमे भी देखुथबो वर्तमान जो बाइडेन अमेरिका रो प्रेसिडेंट तांकर कैरियर एते स्मार्ट एंड स्कोर नुए, किंतु फास्ट एंड फाइनल डिबेटर, फॉरमोस्ट डिबेटर. तेनु करी तांकर टैलेंट से पाई वर्तमान से सुपर अमेरिका रो प्रेसिडेंट. So students, हमें डिस्कशन करिबा रिलेटिंग टू चर्चिल. चर्चिल मध्ये सेही बळी थिले पिले कि noted statesman and orator, speaker. Churchill was also an officer in the British Army. British Army रे Winston Churchill गोटे ऑफिसर हिसाब रे कार्य करुथिले. Churchill was also an officer in the British Army, a historian, a writer and an artist. These are his extraordinary qualities. जने historian थिले, आर्मी रे जॉइन करथिले, राइटर थिले आ भलो आर्टिस्ट मध्ये थिले. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1953. At her is an expert from chapter 2 her of Winston S. Churchill's autobiography, A Roving Commission, My Early Life. मो जीवन रा सत्यतार पदार्पण, मो जीवन रे जोटा घटिछि सेटा मु घटिछि कोन करछि लोकलोचन को आनिछि एवं एई प्रस्ताव को बेस करी हरर एक्सपीरियंस को जेते बेले से कोन करते लोकलोचन को आनिले. विशेष करी हारो बाबद रे जानि दिबो इंग्लैंड रो बेस्ट स्कूलिंग. इंग्लैंड रो बेस्ट स्कूलिंग बा हमर स्कूल रहउछि हारो.
सेमती हम इंडिया रो बेस्ट स्कूलिंग कोडी बेस्ट स्कूल इंडिया रो बेस्ट स्कूल द एशियन स्कूल डेहराडून उत्तराखंड द एशियन स्कूल डेहराडून रो एशियन स्कूल वर्तमान जोटा उत्तराखंड रे अछि से होची बेस्ट स्कूल बा नंबर 1 स्कूल ऑफ इंडिया सेमती इंग्लैंड रो बेस्ट स्कूल नंबर 1 स्कूल थिला हारो जोटी थिले किए स्टूडेंट विंस्टन चर्चिल एवं सेही एक्सपीरियंस को रिटन डाउन करिबा द्वारा लिटरेरी इनफेमस होबा द्वारा लिटरेचर पई 1953 रे से कोन पाइथिले नोबेल पुरस्कार पाइथिले फॉर लिटरेचर देन स्टूडेंट्स examinations for many are not a pleasant experience आमे समस्त पाठ पढुचे पिले कि एग्जाम दबा हमको भलो लागे ना सेति पई पॉलिटिकल साइंस खाता मो देखुथिली 50% रु कम पिला एग्जाम देइछ एनुअल एग्जाम पूर्वरु मध्ये हम ठाकुर को डाकिबा सुपर साइक्लोन हो कोरोना हो हमें केमते ग्रेस मार्क पाई पास होई जेबा चर्चिल मध्ये ता देरो पिले आउटस्टैंडिंग नथिले दूरे कि नथिले से भी एक्सपेक्ट करथिले तांकर मध्ये सेही बडी बडा प्रेजेंट एक्सपीरियंस नथिला एग्जाम ऊपर the apprehension of not doing well makes even bright students anxious जेतेबेले पिला हम एग्जाम देई दउ जेते एग्जाम रिजल्ट हमर पाखा पाखी हबो हम हार्ट बीट सेते बढ़िबो तेना भलो रिजल्ट हेले भलो कहबा यदि भलो एग्जाम करि हम रिजल्ट भलो हो बोली भी गारंटी नै तेनु करी पिले read the following unit of the test and note how the writer took his entrance examination to haro haro को एंट्री करिवा को हेले हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन दबा को पड़े भलो भलो स्कूल रे जदी पिला में एडमिशन करिबा तमे एबिनी नवोदय जानि थिबो नवोदय रे एडमिशन कले मध्ये तुमको एंट्रेंस दबा को पड़े इन ए सिमिलर फैशन हारो स्कूल रे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तांको पई मध्ये टॉप थिला द टेक्स्ट I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations through which for the next 7 years I was destined to journey पिले जेतेबेले आजिकली बापा मांकर बड़ रेस्पोंसिबिलिटी होची पिला मान को केमिति को जे मान को भलो स्कूल रे पाठ पढाइबा भलो कॉलेज रे पाठ पढाइबा से माने केमिति भलो रिजल्ट करिवे सेति पई मैक्सिमम पिला माने आजिकली हॉस्टल लाइफ मेंटेन करछन तार कारण कोन ना टिके हम घरे किछि डिस्टरबेंस रहिछि पिला मान को एक्चुअली फैमिलियर रहनी पढिया पई तो हमें हॉस्टल लाइफ रे छाडीबा आ गुटे कथा होछि पिले मन रख जदि गोटे टैलेंट स्कूल रे गोटे पिला पाठ पढ़े ऑटोमेटिकली तार टैलेंट से बढ़िबो तमे 10 जन पिला अछ 10 जन पिला के भीतर गोटे डल स्टूडेंट अछि ताकू छाडी दियो से ऑटोमेटिकली लेबर करी फाइट करी 10 जन भलो पिला के सारे समान हे जिवो तार पॉसिबिलिटी अछि किंतु पिले 10 जन खराब पिला स्टैंडर्ड पिला के संगे रे जदि गोटी भलो पिला को नै छाडी देलो तार अवस्था जा हबो तमे टिके टिके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अछि तेनु पिले एठी देखिनिया हारो होची टॉप स्कूल टॉप मोस्ट स्कूल से स्कूल रे जो पिला माने एंट्रेंस पई पाठ पढिले तांको कैरियर समथिंग जीनियस तांको कैरियर समथिंग हिस्टोरिकल तांको कैरियर समथिंग ऑप्टिमिस्टिक सो स्टूडेंट्स व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल regions of examination through which for the next 7 years I was destined to journey listen students what is the meaning of a scarcely when eta gota adverbial phrase scarcely when माने जा हार्डली when माने सेया ता माने मोर 12 वर्ष बर्थडे पूर्ण होउनु न होउनु घर लोक माने मते कोन कले मु जोटी इंटरेस्टेड नथिली अनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जाम सी चाहनु थिले एंट्रेंस एग्जाम देई मु हारे जे पाठ पढी बोली थ्रू व्हिच फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स जहा पई आई वाज डेस्टिनेड जर्नी मु गोटे यात्रा आरंभ कले अर्थात मो घरु हारे जे रही पाठ पढीबी these examinations were a great trial to me एवं ए एग्जामिनेशन मो पे गोटे ट्रायल थिला गोटे प्रकार टेस्टिंग थिला मोते द सब्जेक्ट्स व्हिच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर ऑलमोस्ट इनएविटेबली दोज आई फैंसीड लिस्ट प्रकृति रे जो एंट्रेंस एग्जाम थिला जो सब्जेक्ट ऊपर से माने मते पचारिले ता बाबद रे मोर किछि फैंसीड लिस्ट अर्थात इंटरेस्टेड नथिला मु जो सब्जेक्ट जानि दिली मु जो टॉपिक जानि दिली से माने एंट्रेंस रे मते से टॉपिक गुडा पचारलेनी समथिंग अनफेमिलियर टॉपिक मते पचारिले I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. चर्चिल कर इंटरेस्ट दिला हिस्ट्री रो तांको किछि पचरा जाऊ पोएट्री किछि पचरा जाऊ और राइटिंग एसेज द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वेयर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स से माने जो क्वेश्चन गुडा मते पचारिले लैटिन सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स मते पचारिले
and their will prevailed. तांको इच्छा अनुଯାयी कोन हला एग्जाम कंडक्ट हला. Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. मु तो से टॉपिक जानी नहीं, से टॉपिक बाबत रे जतले रिलेटेड मते क्वेश्चन पचारले मु तो आंसर केम देबी. तमे बर्तन एटी पाठ पढुछ, इंग्लिश पाठ पढुछ, मु तुमको आर्ट्स पिला फिजिक्स पचारी तमे आंसर केम देबो. किंतु ये जो आंसर गुडा देई थिबे ओनली टू बीट अबाउट द बुश, माने जो कहते अंधार रे बाड़ी बुलेगा कोन केमते आंसर टा देई थिबे were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. I should have liked to be asked to say what I knew. मु सबले चाहूतिले मु जोटा जानि छि मते पचार तो मु ताको बेटर वे रे एक्सप्लेन करिवि, क्लैरिफिकेशन करिवि, किंतु मो सब्जेक्ट रे मते से किछि पचारलेनी. They always try to ask what I did not know. मु जोटा न जानि दिले मते से पचारले. When I would have willing displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. धरा जाऊ पिले तम मानकर नॉलेज अछि क्रिकेट ऊपर, क्रिकेट ऊपर तुम जे से कथा बार्ता कले तमे धरा जाऊ कोन कले क्रिकेट रिलेटेड किछटा टर्म कहलो, तमर इंटरेस्ट काळे मते क्रिकेट बारे पचारे बिकसी धरा जाऊ क्वेश्चन आरंभ कले टेबल टेनिस रे तमे से कहिबो कोन तम पई से चाहिले जे ये जोटा इग्नोरेंट जानिनी से गुडा हम टेस्टिफाई करिवु. सो have willingly displayed my knowledge. मु चाहिले मोर जो नॉलेज अछि मते किछि पचारंतु. They sought to expose my ignorance. मोर जो अज्ञानता रही छि नॉलेज रे अपोजिट हैला इग्नोरेंस, से बाबत रे से मते क्वेश्चन कले. This sort of a treatment had only one result. I did not do well in the examination. तो जहा क्वेश्चन रे से पचार थिबे से जो आंसर देई थिबे एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे जहा हेतिको परिस्थिति देखिबा. This was especially true of my entrance examination to Harrow. Harrow रे एंट्री करिया पई एटा थिला प्रकृत सत्य घटना अकॉर्डिंग टू चर्चिल. द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन, किंतु डॉक्टर वेल्डन जे थिले however took a broad minded view of my Latin course. थिले खाली पेन एंड पेपर रे हमें मार्क स्कोरिंग कले सेटा हम टैलेंट जणे देबनी. हमर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग नॉलेज रहइबा दरकार, ठीक आउटलुक हमर रहइबा दरकार. तेनु जे हेडमास्टर थिले हारर डॉक्टर वेल्डन took a broad minded view of my Latin course. He showed discernment in judging my general ability. से कोन कले कले पिलाटा सिना टॉपिक जानि नी किंतु जनरल एबिलिटी जानि छी. जनरल एबिलिटी इन द सेंस जोटा में कहू पावर ऑफ रीजनिंग. रीजनिंग कोन पावर ऑफ रीजनिंग मु कहबी 3 = 9, 4 = 16, 5 = 25, 9 = 3 = 9, 4 = 16, 5 = 25, 9 = आमे कोन कले दीटा फार्मूला टे पिला माने यूज कले. तमे भाबिलो जे सात जोटा पचार देने मैथमेटिकल असर्शन में स्क्वायर होन जाई. 3 रो स्क्वायर 9, 4 रो स्क्वायर 16, 5 रो स्क्वायर 25, 9 रो केते 81, किंतु आमे ऊपर लिख दै छै 3 = 9. तनु 9 = केते 3. एटा होची जनरल एबिलिटी. एटा हला जनरल एबिलिटी. से कहले पिलाटा सिना रिटिन किछि करि परनी चर्चिल तार स्टैंडर्ड अछि, से जनरल एबिलिटी रे नंबर 1 हेई परिबो. तेनु वेल्डन कोन कले ताको सिलेक्ट करबो. He showed discernment in judging my general ability. Under discernment in the sense understanding. से बुझी परले प्रकृति रे मोर जनरल एबिलिटी ऊपर स्टैंडर्ड कोन रही छी. Listen students, if any question arises, student, you can ask me, and if any problem relating to Odia, I can also explain in English. Those who are aspirants of English, they can ask me that the word meaning or the sentence is approved to me, and I try to explain it in English. Almost all the Odia रे मोटिके अधिका कहूची कारण ओडिया मीडियम पिला अधिका अछंती. इंग्लिश भी पार्टली कहूची जदि के इंग्लिश मीडियम पिला अच्छा कहबो, I can march myself from A to Z in English. So students, that was the more remarkable because I found unable to answer a single question in Latin paper. I wrote my name at the top of the page
जेतेबेले लैटिन पेपर रे मु एग्जाम देली मते किछि आसिलानी मु कोन कली पेज रो स्टार्टिंग रे आंसर शीट रे मु नाटा को लिखि देली I wrote my name at the top of the page. I wrote down the number of the question 1. Question number 1 लिखि देली आउ कोन कली after much reflection I put a bracket around it. जेतेबेले मते किछि न आसिला से 1 को डिजाइनिंग करबी ना चारि पटे पटे ब्रैकेट दे देली सेही 1 रे I wrote down the number of the question 1. After much reflection I put a bracket around it thus, but thereafter I could not think of anything connected with it. ता पर आ मु किछि प्रश्नर उत्तर देई पारलेनी. That was either relevant or true. जोटा सेही क्वेश्चन रिलेटेड आंसर मते किछि आसिलानी. Relevant means related, what is practical or factual, true. Incidentally, there arrived from nowhere in a particular a bolt and several smudges. घरु बापा मा पठै चंदी एंट्रेंस एग्जाम दबा पई पुनी हारो स्कूलिंग रे पढिबा पई जेतेबेले मु क्वेश्चन पेपर देखिली मते किछि आसुनी खाली सीरियल नंबर 1 लिखि देली तापरे आसी गला पिले जेतेबेले क्वेश्चन ना आंसर हमें न करू तापरे परे कोन हुए हमर आखिरु लोतकर धार बहिबा को आरंभ करिवो. Ocean of tears must be flashing from our eyesight. देख पिले जेतेबेले लुह गुडा बोइला आंसर शीट ऊपर पडिबो ना नाही जोटी लुह पडिला सेट पेपर टा टिके कोन हबो कोचा मोचा हे जिवो समथिंग फेडिंग लागिवो सेट हला कोन हमरो ओल्ड एंड सेवरल स्मचेस जो टर्म टा में यूज करूची. सो स्टूडेंट्स आई गेस्ड फॉर 2 whole hours at this sad spectacle. मु 2 घंटा पर्यंत दुखद नयन रे अनेकिरी बसिली काकू ना आंसर शीट को. And then merciful ushers collected my piece of foolscap with all the others and carried it up to the headmaster's table. जो टीचर माने विजिलेंट थिले इनविजिलेटर से कोन कले पेपर उडा कलेक्शन कले कलेक्ट करे नै करी कलेक्शन करी करी का टेबल ऊपर रखले हेडमास्टर को टेबल ऊपर रखले. It was from these slender indications of a scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. फिर भी मन रख आमर जे रही चंदी हेडमास्टर हरोर डॉक्टर ओल्डन मते सिलेक्ट कले टू क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तांकर फेथ थिला जे प्रकृति रे ये पिलार जनरल एबिलिटी अछि जदियो पेपर मैनिफेस्टेशन पेपर रे किछि लेखि परुनी स्टिल देन he can do the best so far as the continuing of the schooling is concerned. It is very much to his credit. It is showed that he was a man capable of looking beneath the surface of things. से गोटे स्टूडेंट को देखिला पर जानि जेउतिले जे प्रकृति रे पिलार स्टैंडर्ड केमिति अछि एवं केमिति कोन सुपर करिवो एवं निजुने जे प्रिजज करिवो. A man dependent upon paper manifestations. I have always had the greatest regard for him. प्रकृति रे आजिकली दुनिया रे आमे जति देखु जे पेपर मैनिफेस्टेशन पेन एंड पेपर रे किए केते मार्क रखि देला टॉप मोस्ट मार्क रखि देला 90% 95% 80% 85% किंतु आमे जेतेबे क्लैरिटी कि जिबा एक्सप्लेनेशन को जिबा हमहु किछि आसीबोनी सेति के परसेंट मार्क रखि लाभ कोन अछि. सेति पय ब्रिटिश स्कूल रो कोचिंग कोन गोटे पिला जहा को जे पढिला तार रिफ्लेक्शन करबा एनालिसिस करिवो ऑन एग्जामिनेशन पाठ पढा सरीला टॉपिक कंप्लीट होला पर प्रेजेंटेशन रहिबो जोटा कि +3 लेवल रे रेवेन्स रे कंटिन्यू होतला आउ सेटा को से करू नांती प्रेजेंटेशन सिस्टम एबोलिशन कर देले. तनु पिले हमें देखिबा whatever that may be I have always had the greatest regard for him. तनु चर्चिल कहउचंदी डॉक्टर वेल्डन को पई मोर रिगार्ड अर्थात रिस्पेक्ट बा सम्मान सब दिन पई रहिची. इन consequence of his decision ता consequence होची as a result तांको रिजल्ट माने डिसीजन रो फलाफल I was in a due course placed in the 3rd or the lowest division of the 4th or bottom. मु 4th स्टैंडर्ड रे पढिली आउ सेक्शन 3 रे मोर रहिली मोर स्टैंडर्ड and from the names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order. जो माने नुवा नुवा जॉइन कले से स्कूल रे समस्तनकर alphabetical order रे ना रहिथिला. As my correct name was Spencer Churchill began with an S. तनु एस सीरियल आसिला बेले को से कोड जाई सीरियल नंबर पढु जानुथिबो. I gained no more advantage from the alphabet than from the widened sphere of elder letters.
बेले बेले कौन हुए पिला क्लास रे परसेंटेज मार्क अनुଯାयी सीरियल नंबर रहे बहुत पिला मानकर अल्फाबेट अनुଯାयी कौन हुए सीरियल नंबर रहे जदि सेमती पिला मानकर सीरियल नंबर रही था चर्चिल को ना 2 कि 3 रही से क्रेडिट नहीं था मु गोटा बेस्ट स्टूडेंट पुणी देखला को लास्ट को ताको नाटा रही I was in fact only 2 from the bottom of the whole school and these 2 I regret to say disappeared almost immediately through illness or some other causes तांकर लास्ट को रोल नंबर रहिला जेते बेले लाइन रे छिडा होतले लास्ट रे छिडा होतले जेमि आर केंद्र बढिया तेनु ई तांको पर पर आ 2 जण रहिदिले पिला जे लास्ट को 2 जण तांकर मैक्सिमम टाइम ठंडा जर आ पाठ तले होमवर्क सेते बेले एब्सेंट तेणु से 2 जण जेते बेले न आसले चर्चिल लास्ट रे दिबे लोक चिन्हंती काहाकू जे फास्ट रे रहिला आउ काकू जे लास्ट रे रहिला तेणु चर्चिल माने विकल रे से वर्षटा केमिति कटै दिबे देखिबा the Harrow custom of calling the roll is different from that of Eton पहले तमर जेते बेले रोल कॉलिंग होउची एटा गोटे कस्टम तुमको आछंदी हमर लाल दीदी होत कि जो सर मैडम माने ना धर के डाकुचन तमे कोन कहउछ यस सर किबा यस मैडम किबा कहउछ प्रेजेंट सर किबा प्रेजेंट मैडम किंतु इंग्लैंड रे सेमिति कस्टम नथिला कोन एट ईटन द बॉयज स्टैंड इन ए क्लस्टर धाड़ी करी छिडा होतिले lift their hats from their names are called जेते बेले जा नाटा डका होतिला टोपी के टेकी दउतिले बुझि परछन नाही किंतु हैट और कैप भीतर डिफरेंस कोन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैट एंड कैप हैट और कैप भीतर डिफरेंस कोन व्हाट इज द डिफरेंस दिस पेन इज मीनिंगलेस विदाउट दिस कैप ये पेन रे जदी कैप नहीं पेन रो वैल्यू रहउनी ताले कैप इज एसेंशियल गोटे बोतल अछि ता कैप नहीं बोतल ले पानी पुरे तुम रखि परिबो क्षीर आन गोटे बोतल रे तार कैप नहीं ताको सिक्योर जगह रखि परिबोनी कैप ता निहाती एसेंशियल गोटे मेडिसिन बोतल आन तार कैप नथिले कोटी कोन हबो डिसफिल्टरिंग हे जिवो गडी जिवो किंतु हैट कोन टोपीटा हमें पिंधुचे यदि टोपी न पिंधिबा हम मुंड कोन उडी पळेबो हमें खाली गोटे प्रोटेक्टिव पे खरा होची कि ताकर पडुची गोटे पिंधुचे न पिंधिले मध्ये चलिबो विदाउट कैप रे कोन लोक चलु नादी तनु कैप होची एसेंशियल हैट होची नॉन एसेंशियल दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैप एंड हैट सो स्टूडेंट्स लिसन द हरो कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ईटन ईटन मध्ये गोटे स्कूलिंग पे बेस्ट at Eton the boys stand in a cluster and lift their hats when their names are called jete bele tanga na डकाय जाय तो पिटा पिटी उठै दियंती that means presence at Harrow they file past a master in the school yard and answer one by one Harrow रे जते बळे जिबे मार्चिंग करी के पिला जाउथिबे गोटे फाइल पास्ट जाउथिबे टीचर रोल कॉल करूथिबे सेते बळे से माने रेस्पोंड करी के जिबे that was the difference between Eton and Harrow Eton रे to raise their heads Our Harrow कोन they are filing past by responding the teacher. My position was therefore rebelled in its somewhat invidious humility. जेते बेले मु Harrow रे पाठ पढली सीरियल करी समझते जिबे मोर जो पोजीशन ता रहिला invidious humility पूरा मिजरेबल कंडीशन मर्मतुद मो पई काहे के मर्मतुद it was the year 1887 1857 मसिया तामने हम इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन होबार 2 वर्ष परे परे भाबिनी अबुला स्मृति इट वाज द ईयर 1887 लॉर्ड लैंडलॉफ चर्चिल had only just resigned his position as a leader of the House of Commons and chancellor of the exchequer पिले ब्रिटिश रे मध्ये जानिथिबो दीटा हाउस पॉलिटिकल साइंस रे पढिचे हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स रो मेंबर किए थिले चर्चिल कर बापा लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल एवं से थिले चांसलर ऑफ द एक्सचेक्योर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चांसलर ऑफ द एक्सचेक्योर फाइनेंस मिनिस्टर थिले कोठी कर ब्रिटेन न ताकर केते पावर पोजीशन बाबू धाव सिमिलर टू दैट ऑफ निर्मला सीतारमण which is also Indian context रे तेणु पिले
ताको बापा थिले फाइनेंस मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स रो मेंबर केते रेपुटेशन जेतेबेले जे आस्तुबो स्कूलिंग की अरे फाइनेंस मिनिस्टर को पुओ कोन पछरे अछि हाउस ऑफ कॉमन्स को पुओ कोन पछरे अछि लोक माने आजिकल टिके जानती कोन आमे हायर स्टेटस रे अछु हायर डिग्निटी मेंटेन करूछु आम पिला माने मध्ये सेही हायर स्टेटस किबा हायर डिग्निटी रे पाठ पढा पढी करंतु जति हमर सीरियल नंबर लास्ट रे थिबो जे नै से कहबो ये बोते गधडा पाठ पढु तनु देखो चर्चिल को पई केते एटा अपवर्डिंग थिला and he still towered in the forefront of politics became prominent Britain House of Commons towering something victorious something securing something achieving in consequence large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by and I frequently heard the irrelevant comments why she is last of all देखो पिले तमे देखिथिबो जेतबेले पेरेंट्स माने आजिकल इंग्लिश मीडियम स्कूल रे अधिकांश पेरेंट्स माने नै करी जाउछन्ते पिला को छाडुछन्ते पुनी नै करी आसुछन्ते जेतबेले चर्चिल कोन करथिले सेठी सीरियल नंबर रे रहि करी जाई करी सेठी हमर तांकर रोल कॉल को रिस्पोंड करूथिले अलका जो पेरेंट्स माने रहिथिले से माने कोन करथिले तांको किछि इरेलेवेंट कमेंट करूथिले इरेलेवेंट मींस नॉट फेवरेबल जोटा तांको फेवरेबल बा पसंद जोग नथिला तांको चर्चिल को से सेतबेले कोन करथिले टिके रिलेवेंटली निजुक निज अपवर्ड बा फील करबा अपेक्षा से निजुक निज टिके सेम लाजो टिके ताका मन रे थिला एंड ही वाज फीलिंग समथिंग आई मीन इरेलेवेंट पीपल से व्हाई इज लास्ट ऑफ ऑल प्रकृति रे कोन पई से शेषर अछंती चर्चिल कोन पई शेषर अछंती एते बड़ बड़ा माने एक्चुअली पॉलिटिशियन न पुओ व्हाट इज द कंपोनेंट व्हाट इज द रीजन दैट्स व्हाई ही इज लैकिंग बिहाइंड So students, I continued in this unpredictable situation for nearly a year. पिले आमे पाठ पढ़िबा कि न पढ़िबा जेतेबेले आमे गोटे क्लास रे पाठ पढ़छे सब स्टूडेंट माने इक्वली पाठ पढ़छन्ती बोली हमु कहिया को पड़िबो किंतु बेले बेले जेतेबेले आमे धरा जो कोन करछु ना गोटे पाठ टोटली जानिनु किंतु से क्लास रे आमे बसी गिरी रहिलु सेटा हमकु गोटे छलना भलिया लागिला आमे पाठ जानिनु लैटिन पाठ कोन किंतु लैटिन क्लास रे हमें बसिलु आमे जानिनु मैथमेटिक्स पाठ कोन किंतु से क्लास रे हमें बसिलु ताले आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन जहा को मु केबे छलना करि परिबिनी प्रिटेंड होची छलना करिबा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन फॉर नियरली ए ईयर गोटे वर्ष पर्यंत मु एमती क्लास रे बसिली हाउएवर बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म I gained an immense advantage over the clever boys. पिले मु तुमको कहली हारो स्कूल होची बेस्ट स्कूल जदियो चर्चिल को स्टैंडर्ड नथिला तथापि भलो पिला मानक सहित तांकर किछि इंटरलिंक आसीबा द्वारा स्टैंडर्ड ता इम्बाइब हैला आउ कोन आसीला ना दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक जो माने भलो पिला थिले से माने पढिले कोन लैटिन और ग्रीक सब्जेक्ट एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट आउ तो बड़े बड़े चार्मिंग सब्जेक्ट मध्ये पढिले बट आई वाज टॉट इंग्लिश मु इंग्लिश पाठ पढिली सेठी इंग्लैंड रे डल पिला माने इंग्लिश पढन वी वर कंसीडर्ड एज डॉन्सेस हमें एलु कोन स्टूपिड हमें एलु गध पिला निर्गध पिला डॉन्सेस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश हमें केवल इंग्लिश पढिली ता माने इंग्लैंड रे गध पिला इंग्लिश पढंती हम इंडिया रे भलो पिला इंग्लिश अनर्स भलो पिला इंग्लिश जदी कहिले लोक कहबे ये भलो पाठ पढिची हमर स्टैंडर्ड होची स्पोकन इंग्लिश बुझी परछन नै पिले we were considered such dunces that we could learn only English. Mr. Somerville, a most delightful man to whom my debt is great, was charged with the duty of teaching the stupid boys the most disregarding thing, namely to write mere English. पिले आग काल रे आमे विशेष करी कहूछु जेते भलो कॉलेज किमा भलो स्कूल रे जो ग्रेडेशन करा जाय एबीसीडी ये सेक्शन माने आगे भलो पिला रहउतिले तापरे बी सेक्शन तापरे सी आजि केले आउ से सब नै जिए जेते बेले एडमिशन कला थर्ड डिवीजन पिला ये फर्स्ट डिवीजन पिला डी आउ सेक्शन केते को जगह जाई दिबो तार ठीक नै ताकू हमें सेक्शन को लेखि जानि परिबानी आगे कोन पई करा जाउतिला ना विशेष करी जो डॉल पिला माने थिले से माने को स्पेशल कोचिंग किछि दिया जाउतिला मु एग्जांपल एडी कहबी हमें धरा जो एट ए टाइम बर्तन 50 जन पिला को पाठ पढौचे
जदि 50 जन पिला को 5टा ग्रुप आमे करदेले एटा हচ্ছে अमेरिकन स्कूल ऑफ टीचिंग 5टा ग्रुप कर दियो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप फिफ्थ ग्रुप ताले जो पिला मानकर लो स्टैंडर्ड अछि ताको पई कोन कर टीचर मान को रिक्रूटमेंट कर केमिति से माने ये ग्रुप पिला के सहित समतुल्य हेबे दैट इज द बेनेडिक्शन ऑफ टीचिंग किंतु वर्तमान हमर स्कूलिंग कोन कोउटी कोन से प्रोसीजर चलिनी आम भितर कोन रहउची भल पिला रहिले मंद पिला रहिले इंग्लिश पिला रहिले ओडिया मीडियम रहिले हिंदी मीडियम रहिले क्लास चलला रिजल्ट बाहला को जा रिजल्ट को बेस करी आमे खाली कोन करछ एडवर्टाइजमेंट करछ हमर कोन ग्रेजुएशन सिस्टम रे पढौचे कि जो रेसिडेंशियल कॉलेज रे साइंस पिला छन तमरी बैच रो साइंस पिला तांको स्वतंत्र ग्रेजुएशन करा जायछि एबीसीडी जो माने डी लेवल रो पिला स्टैंडर्ड रो छथि ताको स्पेशली इवनिंग आवर कोचिंग दिया होछ केमिति कोन कारण से हाईली पेमेंट करके पाठ पढुछथि तेनु एटी इंग्लैंड रो हारोरे कोन हला जेहेतु चर्चिल से तबले लोअर लेवल ले दिले ताको मध्यम गोटे सुपर स्प्रेडिंग टीचर आसिले ताका ना होछि मिस्टर समरवेल कोन दायित्व नेले सिए प्रकृति रे लोअर बा डनसेंस बा स्टुपिड पिला मानकर स्टैंडर्ड ता केमिति बढ़ी परिबो we are considered some dunces that we could learn only English. Mr. Somerville, a most delightful man, to whom my debt is great. से बहुत खुशी थिले सब बेले delightful man, to whom my debt is great. जोटी प्रकृति रे जहां का पई मु सब बेले पई ऋणी debt होची कोन ऋणी जहां का पई मु सब बेले पई ऋणी Listen. Was charged with the duty of teaching the stupid boys the most disregarding thing, namely to write mere English. पिले आमे पाठ पढ़ी के बर्तन प्लस 2 सेकंड ईयर को आसिलेनी मियर इंग्लिश कोन इंग्लिश रो स्टार्टिंग ता हम पई कोन मिनिमम ता इंग्लिश रे हमें कोन जानिबा दरकार कहिलो इंग्लिश रे हमें प्रथमटा कोन जानिबा दरकार अल्फाबेट रिलेटेड जो स्टडी ताको हमें कोन कहू ऑर्थोग्राफी तनु इंग्लिश लिटरेचर रो फास्ट हमें ऑर्थोग्राफी पढिबा दरकार एवं ऑर्थोग्राफी पई स्पेसिफिक बुक रहिछि ऑर्थोग्राफी पई स्पेसिफिक फंडामेंटल बुक रहिछि हमें से बुक आड़ को जाइना तापर पिले मन रख जो पाठ पढिलो तार टिके हिस्ट्री जानिबा दरकार ता हिस्ट्री जानिबा दरकार हमें इंग्लिश लिटरेचर पाठ पढिचे इंग्लिश लिटरेचर पाठ पढिचे मु गोटे क्लास रे बहुत थर कहिछि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश जेफ्री चौसर को काहे की फादर कहया गला आउ तो एते भल भल फिलोसोफर थिले ताको काहे की कहया गला फादर ऑफ इंग्लिश बोली कोन पई कंट्रीब्यूशन थिला तमे देखो पिले जेते बेले हमें देखो इंग्लिश लिटरेचर सहित एडमिक्सिंग बहुत गुडा रहिथिला लैंग्वेज बहुत प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज रहिथिला लैटिन थिला ग्रीक थिला रोमन थिला ये कोन कले स्पेसिफाइड कले फिल्टरिंग कले लैंग्वेज को एवं गोटे सुप्रीम लैंग्वेज हिसाब रे रखले काकुने इंग्लिश को समथिंग डिफरेंट कले सेहित पे कहला फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोली तनु आमे जदी कहिबा जे मेयर इंग्लिश अर्थात तमे देखो तम मानकर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करिया पई हमर ऑर्थोग्राफी रहिछि ऑर्थोग्राफी काहा को पंक्चुएट करे अल्फाबेट को एवं अल्फाबेटिकल जतबे सीक्वेंस हमें देखिबा सेही हमें जानिबा जे गोटे पिलर रो इंग्लिश स्टैंडर्ड केते किंतु आमे ता ऊपर इन फोकस के करूना आमे खाली कोन करते ग्रामर बुक अछि एक्सरसाइज करि नियो हमर कांसेप्ट क्लियर होबो केमिति हमें भलो मार्क रखिबा सो स्टूडेंट्स he knew how to do it he taught it as one else has ever taught it no one else has ever taught it समस्त इंग्लिश पाठ पढ़ाते किंतु समरवेल टिका डिफरेंट वे रे हमको इंग्लिश पढ़ेइले डिफरेंट वे रे हमको इंग्लिश पढ़ेइले not only did we learn English parsing thoroughly English की से जो मेथड रे पढ़ेइले that is known as a parsing method what is the meaning of parsing method प्रत्येक सेंटेंस को कोन करो फ्रैगमेंट करो डिवाइड करो गोटे सेंटेंस पढ़िबा पूर्व सब्जेक्ट कोन जानो वर्ब कोन जानो ऑब्जेक्ट कोन जानो एडजंक्ट कोन जानो कॉम्प्लीमेंट कोन जानो कंजक्टिव कोन जानो डिस्जंक्टिव कोन जानो दिस इज द मेथड ऑफ पार्सिंग
सी कौन कले आमको पूरा बेसिक लेवल रु पढ़ेले किए समरवेल आमे जो थिलु डल स्टूडेंट मियर इंग्लिश पढ़िलु किंतु आमे प्रोमिनेंट हेलु तांको इन्फ्लुएंस रे सो स्टूडेंट्स बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड कंटीन्यूअसली इंग्लिश एनालिसिस आमे एटी पाठ पढुचे इंग्लिश एनालिसिस आमे करूना प्रेजेंटेशन पिले तमे आज पाठ पढ़िबो इंग्लिश रे 70 रख 80 रख 85 रख 90 रख हम सर्टिफिकेट की देखिबेनी पेपर मैनिफेस्टेशन की देखिबेनी कौन देखिबे स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग तुम लर्निंग प्रोसेस कौन तमे जदी 80% 85% इंग्लिश रे +2 रखिथिबो किंतु गोटे पैराग्राफ पढ़िला बेलु हम पाटी संगे मंगे होदिबो फुल स्टॉप जगह में स्पीडी पढ़ुबा कमा जगह नॉन स्टॉप चलीथिबो ताले इट इज नॉट सिस्टमैटिक तनु पिले Mr. Somerville had a system of his own. He took a fairly long sentence and broke it up into components by means of a black, red, blue, and green inks. जेमती ह्यूमन बॉडी की डिवाइड कला में 206 खंड हाड़ जेकोसी सेंटेंस को डिवाइड कर अति बेसी रे 8टा वर्ड फॉर्मेशन हम 8टा वर्ड आसीबो